लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मिस बॉटनिस्ट, यस स्वाति बत्रा। कैसे हैं आप लोग? हाय शोएब, हाय दिव्या, हाय प्रेरणा, हाय प्रियांशु, हाय अर्पिता, हेलो। यस, तो कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका फर्स्ट लेक्चर, और उससे पहले वी डिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेक्चर नंबर 2। उससे पहले एक शॉर्ट रिव्यू लेक्चर नंबर 1 का भी। हाँ जी, ऑल राइट। हाय, यू आर गुड प्रियांशु, गुड आफ्टरनून नीरज, गुड आफ्टरनून। पीडीएफ नोट्स ओके, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगी राकेश। कल के लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी आई थिंक मैंने अपडेट कर दिया, अगेन क्रॉस चेक। हाय नीरज। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑल राइट, सो लेक्चर नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। आप अगर लेक्चर नंबर 2 से आज स्टार्ट करेंगे तो क्लास के बाद आपको लेक्चर नंबर 1 का रिव्यू करना है, because that was also very important. I told you the basics of sexual reproduction in flowering plants. Okay. Lecture number 2, Microsporogenesis आज हम करने वाले हैं, but before starting that, let's have a short review of lecture number 1, right? Okay. So मैं कौन हूँ? As you already know, I've done my masters in botany, Delhi University topper, BSc in botany, and I have mentored more than 2 lakh students. And this year I have produced AIR 13, 22, 33, 32. And next year probably AIR 1. All right. Okay. So there are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work, and learning from the failure. As I already told you, there are no shortcuts to success. मेहनत करनी पड़ती है, जुनून दिखाना पड़ता है, और मैंने क्या बताया था, मेरी क्लास में वो बच्चे होने चाहिए जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि नीट का जुनून हो, राइट? सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। ओके, सो वी हैव रेगुलर लाइव क्लासेस विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। आपको पता है व्हाट आर द टाइमिंग्स? 2 PM स्वाति बत्रा, 3 PM Sachin sir, and 4 PM Anoop sir. Okay, so in the previous class what we have discussed, parts of a typical flower. I told you about the 4 worlds. Okay, let me ask you one very important question of the previous class. Let me see. Hi, good afternoon Divya. Let me see who all can answer this particular question. Tell me, what is the difference between carpel and the pistil? Is there any difference? Carpel and pistil में क्या difference है? I'm looking at the chat box. Yes, Neet जुनून है, good. What is the difference between carpel and pistil? Please tell me. In the meantime, when you are answering, if you want to join my Plus subscription, I'm launching my batch soon where I'll be taking up plant physiology. Yes. And the parallel Sachin sir is teaching animal physiology. As you know, 8 to 10 questions in NEET examination are from physiology, and that can be tricky also. It can be NCERT based, but at times they can be tricky. So to answer those, to get 360 on 360, we need to have command over animal and plant physiology. And उसके लिए मैंने बताया था deadly combination, botany zoology, 360 on 360, right? Okay. Hi, good afternoon Harshit. Hi Vedant, hello. I can see some of my AIR rankers. Yes. All right, okay. So, hi Faizan. Carpel includes stigma style ovary. Pistil also includes stigma style ovary.
But when the carpels are fused, I told you there are three carpels. Three carpels, when they are fused, equal to one pistil. And when the three carpels are free, three carpels free, and that is equal to 3 pistil. You need to review the previous lecture, those who have forgotten. Right? All right. Yes. Hi, Rajesh. Rajesh, please review the previous lecture also. All right. So what did we did in the previous lecture? We did about stamen. We did a typical stamen has got bilobed anther and sterile filament, right? Can you recall that or not? Okay. This was structure of the stamen. Now, we left on the microspores will be developing into the pollen grains. हमने क्या पढ़ा था? कि a mass of compactly arranged homogeneous cells that occupy center of each microsporangium is called the sporogenous tissue, right? And then each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise, it is capable of forming a pollen mother cell which undergoes meiosis to form the microspores, and the microspores will develop into the pollen grains, and the pollen grains, they are representing the male gametophyte. So we have to discuss this microsporogenesis today in detail, right? Okay. So we have to discuss the anther wall layers, right? So look here, be very, very attentive. Hi Chandu, good afternoon. All right. So you have to be very, very attentive. Now we are going to discuss the anther wall layers. So if I draw like this, if I give you a very, very simplified diagram, look at the diagram. बहुत ही simple diagram है भाई. क्या simple diagram है? ये मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने ये मैंने बना दिया एक पोर्शन, एक पूरा एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का मैंने एक पोर्शन बना दिया, राइट? उसके बाद मैंने इस पोर्शन के अंदर क्या किया? इस पोर्शन के अंदर हमें एंथर वॉल लेयर्स दिखानी है. वी हैव टू रिप्रेजेंट दी एंथर वॉल लेयर्स, राइट? एंथर वॉल लेयर्स दिखानी है हमें कि नहीं दिखानी, बताइए. यस, हमें दिखानी है एंथर वॉल लेयर. तो जो आउटर मोस्ट यहाँ पे इधर ये वाला जो बाहर पोर्शन है, द आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर कौन सा लेयर होगा बताइए मुझे? एपिडर्मिस. देखिए, राइट? तो ये जो हमारा है, क्या है हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द एपिडर्मिस. जो आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, एपिडर्मिस सबसे बाहर. तो ये हमारा, ध्यान से देखिए, बी वेरी अटेंटिव, ये हमारा है माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट? ये देखिए, दिस इज आर माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो है, तो हमारे पास 4 लेयर्स है. वी हैव 4 लेयर्स. विच आर दे? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम. outermost layer is the epidermis, as you must have studied in anatomy of flowering plants. क्या पढ़ा है कि outermost layer तो epidermis ही होती है हमेशा. epi मतलब ऊपर, dermis is a layer. So we have 4 layers: epidermis, we have endothecium, we have middle layers, and we have tapetum. The outermost layer is your epidermis, outermost layer, which is, now we are going to study, these are the 4 anther wall layers. ये 4 anther wall layer है, right? तो anther wall layers हैं, क्या हैं? outermost epidermis, right? Yes, very good Divya, very good Faizan, good. So outermost we have epidermis. Now what are the 4 key points of epidermis? Epidermis के 4 key points क्या हैं? First, epidermis is single layered. It is single layered. तो epidermis का point number 1, it is single layered, right? Then, is epidermis living or non-living? Epidermis is living, right? Epidermis
इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, आउटर मोस्ट लेयर है वो तो हम कर ही चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन, राइट, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है दैट वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यस, but a very important question of नीट एग्जामिनेशन, नीट में अगर आपको प्रोटेक्शन का काम या डेहिसेंस वर्ड we are going to discuss in the later part of the lecture, very important question of नीट, be very attentive, what, ध्यान से, be very attentive, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस का आता है, if it is asked, तो एनसीईआरटी में ये जो आउटर 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, तो एज पर एनसीईआरटी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, these 3 combine, they perform the function of protection and dehiscence. dehiscence मतलब ब्रेकेज, जो अभी हम लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में करने वाले हैं, राइट, सो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, ये तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, प्रोटेक्शन डेहिसेंस का काम करते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, राइट। तो नीट में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ऐसा नहीं सिर्फ एपिडर्मिस मार्क करके आना है, अगर मैं बाउंड हूँ, मेरे पास डायर सिचुएशन है कि मेरे को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, इफ आई एम बाउंड टू सिलेक्ट देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एपिडर्मिस, बट अगर क्वेश्चन आता है प्रोटेक्शन डेहिसेंस कौन कर रहा है, देन एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, ये तीनों मिलके प्रोटेक्शन डेहिसेंस करते हैं, राइट, ओके। सो ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर, सिंगल लेयर लिविंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, एंड thin walled, this was a question asked in NEET, whether it is thin walled or thick walled, so I can write here that epidermis is, it is thin walled, right, thin walled है, आपको याद रहेगा, सर्कल बना दिया ऐसे, तो thin walled, clear, all the 4 points are clear। dehiscence मतलब ब्रेकेज होता है, प्रियांशु वेरी गुड, बिल्कुल ब्रेकेज होता है, टैपेटम, न्यूट्रिटिव लेयर, बिल्कुल चंद्रू, हम आ रहे हैं क्या क्या लेयर्स के फंक्शन है, क्योंकि बिकॉज अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपिडर्मिस, राइट, ओके, यस, सो लेट्स गो फर्दर, एपिडर्मिस इज डन, नाउ व्हाट अबाउट एंडोथीसियम, second layer is the endothecium which is next to the epidermis, right, so outermost layer was epidermis, innermost layer is tapetum, but epidermis के बाद कौन सी लेयर है, you can see in the diagram, endothecium, now endothecium, it is what, it is thin walled or it is thick walled, right, epidermis was thin walled but endothecium is, it is thick walled। अब थिकनिंग्स किसी ना किसी चीज़ों से बनी होंगी, thickenings are made up of what, the thickenings are made up of alpha cellulose, right, alpha cellulose, if I say the alpha cellulose is present on only inner tangential walls, अब आप बोलोगे मैम what is tangential, what is radial, very simple, suppose this wall, because we don't have a 3-dimensional diagram here, so I am going to explain like this, very simplified tarika of explaining radial and tangential walls. These small ones, these are the radial walls, and the bigger ones, these are the tangential walls, these are the radial ones, these and these and these bigger ones are the tangential. Now the one which is facing towards me is the inner tangential wall, and the one wall which is facing towards you, it is the outer tangential wall. So the thickenings of alpha cellulose are present only on the inner tangential wall. That means the thickenings are differential, they are non-uniform, they are not uniform। अगर uniform होता तो वो रेडियल पे भी होते, इनर टेंजेंशियल पे भी होते और आउटर टेंजेंशियल पे भी होता, बट द थिकनिंग्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द इनर टेंजेंशियल वॉल्स, राइट। सो थिक वॉल्ड है,
अल्फा सेल्यूलोज से बना है, थिकनिंग सिर्फ इनर टेंजेंशियल वॉल्स पे प्रेजेंट है, एंड एंडोथीसियम इज डेड, राइट, इट इज डेड. एपिडर्मिस क्या था? एपिडर्मिस वॉज लिविंग, द सेल्स वर लिविंग, बट एंडोथीसियम इज, एंडोथीसियम क्या होगा? डेड. It is dead at maturity, or you can also say it is dead, right? So endothecium is done. अब आप बोलो कि एंडोथीसियम में अगर पूरे में थिकनिंग्स होंगी तो फिर डिहाइज कैसे होगा? आंसर, हाउ आर द pollen grains going to be released? How will the pollen grains be released? Right? I'm going to tell you now. Yes, okay. Divya, RF, please tell me. Callose deposit नहीं है, callose नहीं है, callose is different, alpha cellulose is different, callose is different. Can anybody tell me what are those points where the thickenings of alpha cellulose are absent? Can anybody please tell me? Alpha cellulose की thickenings कहाँ पे absent है? कौन से ऐसे point हैं? उन points को क्या बोलेंगे? उन points को बोलेंगे stomium, right? तो ये देखिए यहाँ पे होगा आपका स्टोमियम. जस्ट अ मिनट, कहाँ पे होगा स्टोमियम आपका? लुक हियर, दिस पॉइंट, these 2 points, they are representing what? Stomium, where the thickenings are absent. Why? Because if the thickenings are persistent everywhere, then how will the pollen grains be released? Right. So there are 2 points where the endothecial thickenings are absent, and those points are called stomium, from where the pollen grains will be released. The pollen grains, the anther will dehisce, it will break. Dehiscence मतलब यहाँ breakage होगा. So अगर question आया, if the question comes, क्या question आया? कि अगर question आया, क्या आएगा? कि कहाँ पे anther का dehiscence हो रहा है, कहाँ बन रहा है line of dehiscence, तो आप क्या बोलोगे? क्या है line of dehiscence? Stomium, right? Line of dehiscence stomium. और कौन सी layer से हो रहा है? Which layer? Endothecium, right? Okay. So the middle layers, third layer, middle layers, it is several layered. Majority books write it wrongly that middle layer is 1 to 3 layered. No, it can be more than 3 layered. That is why the correct terminology for the middle layer, it is several layered. So middle layer, it is several layered. We should not write it as 1 to 3 layered. We should write it as several layered because it can be more than 3 layered, right? Several layered है, again living है, again thin walled है, right? Function क्या है? Now, here comes a controversial question. What NCERT writes and how you need to answer. Now, listen to me very, very carefully. Okay, as per NCERT, we know epidermis, endothecium, middle layers perform the function of protection and dehiscence. NCERT is not mentioning the individual function of the layers, right? But if in the exam, in the NEET examination, if we are bound to select the answer and we have to give the answer individually, कि individual layer का function क्या है? So epidermis, what is it doing? Protection, right? Dehiscence कौन कर रहा है? Endothecium. Middle layers, they also provide nutrition. But as per NCERT, the main nutritive layer is your tapetum. That is the 4th layer, that is the innermost layer, tapetum. So if the question is there, which is the nutritive layer which is providing nourishment to the pollen grains, you are going to mark tapetum. But in case the question is not mentioning tapetum and you are bound to select the answer, which layer is providing nourishment, and if you are given 3 options, middle layers, endothecium, epidermis, then what you are going to select? तब क्या select करेंगे आप? You are definitely going to select, yes, hi Veeral, okay, tell me what you are going to select. Crystal clear Pranshu, that's superb. Crystal clear. What you are going to select? The middle layers. अबे tapetum option में ही नहीं है जब, तो मार्क करेंगे ना. हाँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है नीट एग्जामिनेशन में, ट्रू फॉल्स वाला, कि मिडिल लेयर्स प्रोवाइड नरिशमेंट. एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज एज पर एनसीईआरटी
tapetum is the nutritive layer. So am I clear? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, हम मार्क नहीं करेंगे, इनकरेक्ट बोलेंगे, स्टेटमेंट नहीं मार्क करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दे रहा है और उनमें से मुझे सिलेक्ट करना है, तो मुझे मार्क करना पड़ेगा मिडिल लेयर. मिडिल लेयर आर एफीमेरल. एफीमेरल न्यू टर्मिनोलॉजी. एफीमेरल वर्ड कहीं पर भी आएगा, एफीमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड. Middle layers are ephemeral. Why? Because they degenerate very soon after providing nourishment, nutrition to the developing pollen grains. I hope it is crystal clear. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में सबको? Likes? I want to see some likes. And if you haven't subscribed our channel Neet Elixir, please do it. And today I'll also be taking a special class on Plus platform. So अगर अभी तक आपने Unacademy लर्नर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी तुरंत लर्नर ऐप डाउनलोड करिए, बिकॉज आज मैं ले रही हूँ स्पेशल क्लास एट 7 PM. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Most expected questions of sexual reproduction, and Dr. Sachin Kapur will be taking the class at 9 PM. Most expected questions of human reproduction. So those two classes not to be missed. Okay, yes, superb. आ रहा है समझ में प्रियांशु? That's very good. ओके. एंडोथीसियम डेड है. एंडोथीसियम न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है फेजन. मिडिल लेयर प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन. राइट? ओके मानसी. ओके, लेट्स गो फर्दर. तो अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि कौन सी मेन न्यूट्रिटिव लेयर है, तो क्या बताएंगे आप? द मेन न्यूट्रिटिव लेयर इज व्हाट? द मेन न्यूट्रिटिव लेयर इज, आई वांट टू सी इन द चैट बॉक्स. आई वांट सम लाइक्स, आई वांट सम हार्ट्स, आई वांट सम पिज्जाज, कैंडीज. कुछ नहीं मिल रहा भाई. I didn't have my lunch today. I'm waiting in the chat box for your answer also. Which is the main nutritive layer? कौन सी main nutritive layer है? बताइए. Yes, excellent. फैजान, मोहम्मद आरिफ, बहुत बढ़िया. The main nutritive layer, yes, yes, excellent, excellent. The main nutritive layer is tapetum, innermost layer, nourishment to the pollen grains, right? And what more features are there of tapetum? Tapetum, yes, generally multinucleated, and they have a prominent nuclei. You can see the nuclei, they are very much visible, prominent nuclei and dense cytoplasm. Who is going to tell me what is dense cytoplasm? Dense cytoplasm का मतलब होता है lot of cell organelles. यार, Golgi bodies. Why? Because the layer is very active. It has to provide nourishment. If it has to provide nourishment, it needs to have lot of cell organelles, right? बहुत सारे cell organelles चाहिए. यार, Golgi bodies क्यों nourishment कैसे provide करेगा? Right? पैसा होगा तो खर्च कर सकता है, सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं है तो प्रोवाइड क्या करेगा, नरिशमेंट कैसे देगा, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? दिमाग के ढक्कन खोल के सुनिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर. बॉटनी है ना, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी 360 on 360, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, राइट? ऑल राइट, आई थिंक थैंक यू दिव्या. तो खूब सारे एप्पल, टोमेटोज, कैंडीज नहीं मिली, पिज्जाज मिल गए. अर्पिता ने दे दिए पिज्जाज. हाँ, अभी मेरा पेट नहीं भरा ना, बहुत सारे पिज्जाज खाने हैं अभी. ओके, ऑल राइट. सो टैपेटम को अभी पॉइंट मिस तो नहीं हो हमारा. इनर मोस्ट लेयर नरिशमेंट दे रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म है. यस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चा गलत करके आता है नीट एग्जामिनेशन में. क्या गलत करके आता है? अभी हमने पिछली क्लास में देखा, ऑल द सेल्स, एवरी स्ट्रक्चर वॉज डिप्लॉयड, बट tapetum is polyploid. Very, very important question. Polyploid. इसका मतलब अगर मुझे क्वेश्चन आया, मतलब 2n से ज़्यादा, 3n, 4n, epidermis, endothecium, middle layers, diploid, but tapetum polyploid. Yes, if the question comes, tapetum may polyploid, because there is no option. And if they are bound to select between haploid and diploid, then you will go for diploid. But yes, if you are given the options between diploid and polyploid,
then tapetum is polyploid, right? If it is polyploid, that automatically means the DNA content is also very much high. DNA content भी बहुत ज़्यादा होगा, right? That means tapetum also shows polyteny, Polyteny, एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर 2n से ज़्यादा पॉलीप्लॉइड, डीएनए कंटेंट ज़्यादा polyteny. So tapetum is the layer which shows polyploidy as well as polyteny. Is it clear? Oh, crystal clear. प्रियांशु को बहुत मजा आ रहा है क्लास में. Crystal clear. सबको आ रहा है कि सिर्फ प्रियांशु को ही आ रहा है मजा भाई? Now I want to see some likes. You know, when I am here, I expect some likes from you people. है ना? some भी नहीं. बहुत सारे likes from you people, right? No, Chandru, more than one nuclei is multi-nucleated. Polyploidy and polyteny means polyploid chromosome number ज़्यादा, DNA ज़्यादा, that is polyteny. Hi Farman, how are you? Doing good? Hi Mansi. All right. So we have done the anther wall layers. तो quickly एक 30 सेकेंड में रिव्यू करते हैं. Innermost layer tapetum, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है tapetum. Outermost layer epidermis, डेसेंस में हेल्प करता है एंडोथीसियम. tapetum ऑप्शन में नहीं है. न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल लेयर. एफिमेरल कौन है? मिडिल लेयर. प्रोटेक्शन कौन देता है? एपिडर्मिस. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन डेसेंस कौन देता है? एपिडर्मिस. एंडोथीसियम, मिडिल लेयर. सांस ले लेते हैं. सांस ले लें हम. तो ये तो एक सॉन्ग, कौन से सिंगर का सॉन्ग था जो वो एक ब्रेथ में गाया था? चलते देखते हैं किसको पता है, चैट बॉक्स में बताइए मुझे. हु वाज दैट सिंगर? तो वैसे कुछ करते हैं मैराथन में. मैराथन्स भी लॉन्च होंगी भी आपके लिए, वैसा कुछ करें क्या? हु इज ऑल एक्साइटेड फॉर द मैराथन? ओके, दिव्या, मानसी, अर्पिता, ऑल राइट, ओके. बहुत मजा आ रहा है अर्पिता, गुड. ऑल राइट, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं अब हम. एंथोवॉल लेयर्स के बाद tapetum ही एनक्लोज करता है. याद है आपको भी? आई टोल्ड यू अबाउट स्पोरोजिनस टिश्यू. तो स्पोरोजिनस टिश्यू ही था जो डिप्लॉइड था. सो सॉरी, जिसके अंदर पोलन मदर सेल्स थे जो मियोसिस करके हैप्लॉइड पोलन बनाता है, राइट? So this was all about the anther wall layers. Now the next interesting topic आ रहा है Microsporogenesis. Yes, a very important question of NEET examination जो 99.9% जनता एग्जाम में गलत ही करके आएगी. और मैं जानती हूँ गलत करके आओगे कि मैं नहीं बताऊंगी आपको. बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमीटोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमीटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम microspore mother cells by the process of meiosis. तो क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताइए? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू और फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis. मियोसिस के प्रोसेस से सिर्फ इतने से इवेंट को ही बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो इफ यू गेट अ न्यूमेरिकल, अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी मियोसिस, कितनी मियोसिस इन्वॉल्व्ड है किसके अंदर, एक बार अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रही हूं तो उसके अंदर कितनी मियोसिस इन्वॉल्व्ड है? ओनली वन मियोसिस इज इन्वॉल्व्ड. सिर्फ एक मियोसिस इन्वॉल्व्ड है, राइट? क्रिस्टल क्लियर. एक मियोसिस. हाय मसदा शोएब, गुड,
Good afternoon. Welcome to the class. All right. Okay. So microsporogenesis. Micro word always associated with the male. Mega word, macro word is always associated with the female. Hi Akash, how are you? I am doing super. All right. So microsporogenesis, formation of microspores from the microspore mother cells by the process of meiosis. Thank you so much, Raju. All right. So I'm going further. Microsporogenesis में very good. Everybody's. I have got gems with me. You know, सारे questions के answers almost सही बताते हैं बच्चे. Very nice. Okay. All right. Microsporogenesis के अंदर देखो यहाँ पे कितना बढ़िया. It's a very beautiful diagram here. कि sporogenous tissue के जितने भी cells हैं, they are all capable of forming a potential pollen mother cell, which is undergoing meiosis to form microspores, right? And वही microspores, they are developing into the pollen grain, right? Clear? So we are going to represent this. Look here, आपको मैं एक बहुत clear flow chart की form में I am going to represent this. Look here. We have microspore mother cells, right? हमारे पास microspore mother cells हैं जिनका ploidy level है 2n, diploid, right? Now they undergo meiosis to form what? Microspores, right? कितने microspore बनेंगे? I told you in the previous class. कितने microspore बनेंगे? बताइए. Microspore कितने बनेंगे? 4 microspore, and these 4 microspores, these are connected with the help of Fevicol-like structure, and that Fevicol-like structure is called callose. Abhi somebody was confusing between alpha cellulose and callose. Now this is callose, which is the alternative name of callose is beta 1,3-glucan. So the 4 microspore, in 4 microspores, I told you in the previous class, that is also equivalent to 1 microspore tetrad, right? So 1 microspore tetrad, it has 4 microspores, and these 4 microspores, the ploidy level of these microspore is n, right? तो ये हमारा यहाँ पे देखिए crystal clear concept हो जाना चाहिए. ये 4, these 4 are 4 microsporangia. अब इस microsporangia में microspore बन गया, but these microspores, 4 microspores are going to develop into the pollen grains. The ploidy level is n. That means अब ये जो 4 microsporangia हैं, ये 4 microsporangia को आप क्या बोल दोगे? 4 pollen sacs, because now the microsporangia is developing into the pollen sacs. They are developing into the pollen sac, right? That means now the concept should be crystal clear. Actually, the layer tapetum secretes an enzyme callase. The callase is going to dissolve this callose, because callose is Fevicol का जोड़. जब तक callose या Fevicol का जोड़ dissolve नहीं होगा, तब तक the microspores won't be separated. So tapetum secretes callase, which dissolves callose, and then the microspores will developing into the pollen grains. That means अगर मैं plants के अंदर tapetum को destroy कर दूँ, the plant aims का previous year question, applied question, कि if I destroy the tapetum, will the plant become sterile or the plant be fertile only? The plant will become sterile. Why? Because if I destroy the tapetum, callase will not be secreted. If callase is not secreted, callose will not be dissolved. If callose is not dissolved, then the microspores will not be separated and they won't be developing into the pollen grains, right? It's a lag, okay? Why callose gets deposited around the microspore tetrad? Because callose tries to hold the microspores till the time the microspores develop. अगर callose नहीं बनेगा तो microspores properly develop नहीं होंगे pollen grains के अंदर. मोहम्मद आरिफ
All right, okay. I think this is crystal clear. It is crystal clear. यहाँ तक clear है सबको? देवांश मले, RF, it's clear. All right. So that means microsporogenesis involves. So I will again write this. This is very important. That microsporogenesis involves 1 meiosis and 0 mitosis. Majority students give the answer that microsporogenesis involves 1 meiosis and 2 mitosis. No, 2 mitoses are there in microgametogenesis, not in microsporogenesis. Microsporogenesis involve करता है 1 meiosis and 0 mitosis. 0, कोई mitosis नहीं होगा microsporogenesis में, right? I hope it is crystal clear till here. I think it's crystal clear, absolutely clear till here. सबको समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ भाई. कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है, मेरा तो कॉन्सेप्ट अगर मेरा टीचर क्लियर करता था मुझे मज़ा आता था. मुझे लगता था यार ये कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था, ये क्वेश्चन आएगा तो 100% मैं एग्जाम में सही करके आऊँगा यार. क्रिस्टल क्लियर है? गुड. दिव्या क्रिस्टल क्लियर. RF क्रिस्टल क्लियर. यस समीर गुड, एक्सेलेंट, गुड गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अब जो मैंने चीज़ बताई उसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे. द डिप्लॉयड माइक्रोसोम मदर सेल अंडरगोज मियोसिस 1 टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेल्स. अल्टीमेटली एक मियोसिस के अंदर मियोसिस 1, मियोसिस 2, 1 और 2 के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स clustered together. Thank you Priyanshu, enjoying the session. Good. The cluster is called microspore tetrad. जब कैलोस डिसॉल्व होगा, देखिए सेपरेट pollen grains आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सेपरेट pollen grains, right? Clear है separate pollen grains? Okay. So this we have already discussed. All right. Let's go further. Similarly, all the other diploid. I'm talking about one diploid mother cell. ऐसे तो 1000, 2000 बहुत सारे मदर सेल हो सकते हैं, राइट? जो मियोसिस करेंगे टू फॉर्म बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स. ओके, लेट मी आस्क अ न्यूमेरिकल हियर. Let me ask a numerical here, a very important question of NEET examination which can be asked. If there are 1000 microspore mother cells, I repeat, if there are 1000 microspore mother cells, 1000 microspore mother cells हैं, 1000, how many pollen grains will be formed? Tell me. If there are 1000 microspore mother cells, how many pollen grains will be formed? Can you please tell me in the chat box? I am waiting. 1000 microspore mother cells हैं, तो कितने pollen grain बनेंगे? बताइए. 2000? No. Yes, Priyanshu got the right answer. Faizan, excellent. Beta 1 से 4, from 1, 4 are formed. So from 1000, 4000 will be formed. No, Arpita, 4000 बच्चा. 4000, 1 से 4 बनेंगे. From 1, 4 are formed. Yes, Divya, excellent, very good. Deepu beta, 4000 will be formed बच्चा. All right. तो pollen grain की बात कर रहे हैं. Each haploid microspore matures to form haploid pollen. उसके बाद mitosis होगा. देखो maturation लिखा है. That will be discussing. But microsporogenesis is not involving mitosis. It is only involving meiosis. Right? Is that clear? तो ये वाली बात जो asymmetrical division वाली बात है, GCVC, this we will talk about in microgametogenesis. अभी हम बात करेंगे कि microgametogenesis में जब microspore pollen में develop हो रहा है, microgametogenesis में 2 mitoses will be involved. First mitosis, which is going to form 2 cells. Which 2 cells? Generative cell and vegetative cell, right? And GC and VC. Then further, generative cell will also undergo mitosis to form 2 male gametes, right? तो हो गई 2 mitosis.
But in over 60% of angiosperms, majority of angiosperms में जब GC-VC are formed, generative cell, vegetative cells are formed, anther is dehisced and the pollen grains they come out, right? ठीक है? तो मतलब 60% of angiosperm में जब GC-VC बन जाता है, generative cell और vegetative cell VC, vegetative cell बन जाता है, then the pollen grains they come out. That means if you get a question कि माइक्रोगैमीटोजेनेसिस क्या है, गैमीट्स का बनना, एंड माइक्रोगैमीटोजेनेसिस में हाउ मैनी माइटोसिस आर इन्वॉल्व, सॉरी 2 माइटोसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 1 meiosis, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस 2 माइटोसिस. I hope it is clear, crystal clear. Okay, so now that means over 60% of angiosperms, the pollen grains are dispersed at 2 cell stage. And what are those 2 cells? VC and GC. VC is big, it's large. It is having a irregularly shaped nucleus, right? VC is large. VC is having a convoluted. You can also use the word convoluted, a irregular shaped nucleus. It is full of reserve food, right? GC is smaller. Look here. I'll show you the diagram. This is, suppose this is your VC, and VC has a irregular nucleus, right? GC, it freely floats. It freely floats. किसके अंदर? It freely floats in the cytoplasm of VC. So GC, it is spindle shaped and it freely floats in the cytoplasm of VC, and GC is having a irregular and ovoid nucleus. GC is having a ovoid or spherical nucleus, but VC is having a irregular convoluted nucleus. GC खुद spindle shaped है, लेकिन GC का nucleus oval या spherical है, और VC का nucleus irregular convoluted है. Now you tell me which cell is having dense cytoplasm and prominent nucleus. Can you tell me which is having dense cytoplasm and prominent nucleus? फटाफट बताइए, dense cytoplasm and prominent nucleus कौन से सेल में होगा? चैट बॉक्स में मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का कि which cell is having dense cytoplasm and prominent nucleus. Yes, किस सेल में dense cytoplasm prominent nucleus होगा? बता रहे हैं नहीं बता रहे? नहीं बता रहे हैं. आज मूड नहीं है बताने का. आपका क्या मूड नहीं है? बताओ बताओ जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. Very good, Mohammed Arif. GC. GC is having a prominent nucleus dense cytoplasm. Okay, which cell out of this, which cell will form the pollen tube? बताइए मुझे, कौन सा cell pollen tube बनाएगा? VC. That's why the VC is called the tube cell. And which is going to divide to form the 2 male gametes? GC. GC will divide to form the 2 male gametes, right? Right? Is this clear to everyone? So that means now we are through what is microgametogenesis. Microgametogenesis क्या होता है? Microgametogenesis involve करता है 2 mitosis जब microspore is developing into the pollen grain. In one mitosis, GC-VC is formed, and in another mitosis, the GC divides to form the 2 male gametes, which are non-motile, which are amoeboid, right? So we have 2 cells, VC and GC, and further GC will divide to form 2 male gametes. Thank you, Priyanshu. Is that clear till here? Okay. So this we have already done. Okay, by 3 cell stage में later on the GC will divide, but we will mostly talk about the 2 cell stage because over 60% of angiosperms में 2 cell stage की बात चलती है, right? Okay. This is a very, very beautiful diagram of GC-VC. GC is dividing to form 2 male gametes. VC is forming the pollen tube. That's why which cell is called tube cell?
VC. Look here how beautifully the GC is dividing. Amazing, beautiful diagram. How GC? Yes, peasant, meiosis नहीं होता है. Meiosis सिर्फ आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता है. माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में सिर्फ only and only क्या होता है सिर्फ? Mitosis is there. Only and only mitosis, right? Okay, crystal clear. Perfect. Priyanshu, crystal clear. Now, the microspores have developed into the pollen grain, right? They have developed into the pollen grain. How beautiful the pollen grain looks. Pollen grain is representing the male gametophyte, right? Now, if I ask you a question, this is line of NCERT. Whether the pollen grain is partially developed male gametophyte or it is fully developed male gametophyte. Can you tell me? Thank you, Sameer. Okay. Whether it is partially developed, pollen grain is partially developed male gametophyte. Pollen grain तो partially developed है. अभी ये pollen grain fully developed male gametophyte में change होगा. तभी तो होती है दो mitosis. Right. Pollen grain is partially developed male gametophyte. And wow, how beautiful the pollen grain looks. अभी हम बात करेंगे pollen grain की wall की, exine की, intine की. How beautiful the pollen grain looks, right? So pollen grain, the study of pollen grain, can you tell me? The study of pollen grain, it is known as palynology. The study of pollen grain, क्या बोलते हैं study of pollen grain को? Palynology बोलते हैं, right? Can you tell me? Pollen grains are generally spherical, right? And NCERT में generally लिखा है या always लिखा है? Always आएगा तो गलत है. Generally spherical, right? And they are 25 to 50 micrometers. Sometimes they ask because NCERT is mentioning micrometers, so they can confuse you with the dimensions. They can say millimeters, they can say centimeters. It is micrometers, right? It is not centimeter, it is not millimeter. 25 से 50 माइक्रोमीटर NCERT की डायमेंशंस हैं, राइट? NCERT की आपको सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए. कैसे? Golgi bodies 0.5 to 1 micrometer, perinuclear space 10 to 50 nanometers, mitochondria 1 to 4.1 nanometers और millimeters और micrometers. बताइए क्या होगा? माइक्रो नैनोमीटर मिलीमीटर होगा तो बाहर निकल जाएगा. माइक्रोमीटर होगा, मिलीमीटर नहीं होगा, राइट? देन सिस्टर ने कितना था? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, राइट? तो आपको इसका मतलब सेल सारी डायमेंशन, सारी ईयर्स यहाँ पे याद होनी चाहिए कि बुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी हियर फिट इन योर कंप्यूटर्स, राइट? ओके, सो pollen grains, they are full of reserve food material. खूब सारा reserve food material है, right? Clear? That's why they have vitamin, minerals. It has been claimed that the pollen grain products are used to increase the performance of race horses and athletes. And the Western countries, the pollen grains are also available in the form of syrups and tablets, right? I hope I am clear. I am actually, the data of NCERT is just fed in my computers, right? All right, Divya. Okay, so now we are talking about the pollen grain wall. The pollen grain wall, it is, the wall of the pollen grain is stratified. pollen grain की जो wall है वो stratified है. Strata का मतलब क्या होता है?
स्ट्रैटा वर्ड जहां भी आ जाए, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, लेयर्स है, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स. द आउटर लेयर इज द एक्साइन, द इनर लेयर इज द इंटाइन. इसका मतलब इफ आई गिव यू अ वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम of the pollen grain, this is the plasma membrane, PM. So if I tell you this question, the cytoplasm of the pollen grain is surrounded by plasma membrane, right? Then this is the intine, right? This is the intine, and this is which is having a lot of different designs. This is exine. This is exine. The blue one is intine. Is that clear? A very simplified diagram. Clear hai Divya? Good. Very simplified diagram. Clear है सबको? ठीक है बच्चा लो आगे बढ़ते हैं. स्पोरोपोलिनिन हुआ, यस. फर्स्ट, अब अगर यहां पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2-3 डिस्कस करें, नीट में आ सकते हैं जो. विच लेयर शोज स्कल्पचरिंग. स्कल्पचरिंग मतलब वैरायटी ऑफ डिजाइंस, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स. सो कौन सी लेयर स्कल्पचरिंग शो करेगी? स्कल्पचरिंग मतलब, स्कल्पचरिंग मीन्स वैरायटी ऑफ पैटर्न्स, वैरायटी ऑफ डिजाइंस. तो कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स? यस यस भूषण. स्कल्पचरिंग कौन शो करेगा? एक्साइन. व्हाई द स्कल्पचरिंग इज इंपॉर्टेंट? व्हाई? कॉलेज में हमारे प्रोफेसर होते थे जो हमें बहुत सारे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स देते थे और बोलते थे कि पॉलन ग्रेन्स देखकर आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं. अगर पॉलन ग्रेन की एक्साइन पे ऐसे स्पाइन होता है, ऐसे मैंने बनाया, that means it belongs to sunflower family. That means what is the significance of sculpturing? The significance of sculpturing, it will help in which field of science? Can you tell me? It will help in which field of science? Taxonomy, right? The significances, it will help in taxonomy, matlab it will help in identification that the plant belongs to which family, right? And you can see certain portions where, अभी हम पढ़ेंगे स्पोरोपोलिनिन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. That we are going to discuss, but not in this class, in the next class, right? But before you go, listen to me very carefully. I am going to start very soon on Plus platform. What? Hi, good afternoon, Hari Shankar. Plant physiology, and Sachin, Dr. Sachin Kapur will be taking up animal physiology. So you can use my code Swati, 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 for getting into the Plus subscription. तो वेट नहीं करिए, आज ही आप प्लस के अंदर अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिए और आज ही प्लस में सब्सक्राइब करिए, राइट? टू बी माय फेवरेट स्टूडेंट, राइट? तो आज ही करना है आपको ये, क्योंकि आप मिस नहीं करना आपको लेक्चर्स, राइट? और आज एक स्पेशल क्लास भी है, इनफैक्ट 2 स्पेशल क्लासेस हैं. डॉक्टर सचिन कपूर टेकिंग अप द स्पेशल क्लास एट 9 p.m. and I am going to take the special class at 7 p.m. The most expected question, NCERT based question, धमाकेदार questions किसके? Sexual reproduction के. Thank you Preeti. All right, ठीक है? So this is clear to you, everyone? Okay. So rest we will be discussing in the next class. And before you go, join our Telegram channel for the PDF notes, for the handwritten notes. Neet, Elixir. और अभी भी अगर आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत अभी क्लास के बाद लर्नर ऐप डाउनलोड करें, राइट? उसके अंदर नीट यूजी में आप एनरोल करें, स्पेशल क्लासेस इन प्लस में सब्सक्रिप्शन लें. एंड फॉर अवेलिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड स्वाति, आपकी स्वाति मिस बॉटनिस्ट SWATI.
एंड लर्नर ऐप में जाके आपको स्वाति बत्रा प्रोफाइल को फॉलो करना है ताकि आप कोई अपडेट मिस नहीं करें, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, एंड इसके बाद लेक्चर आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर 5, डॉक्टर सचिन कपूर टेकिंग अप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टुडे। सो बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक 2 मिनट्स को आपका लेना है और इसके बाद 2 मिनट के बाद तुरंत नीट एलिक्सर चैनल पे मिलना है। थैंक यू सो मच।